गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 16th फाइनेंस कमीशन। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। 16th फाइनेंस कमीशन सेटअप कर दिया गया है और कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2025 तक जो है इनको अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करनी है। तो यूनियन कैबिनेट की मंजूरी जो मिलती है फाइनेंस कमीशन को, उससे होता क्या है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट की फाइनेंसिंग हो गई, चाहे कि कितना स्टेट्स को रेवेन्यू देना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स में क्या कितना इंक्रीज जाएगा, ग्राम पंचायत की इनकम को कैसे बढ़ाना है, ये सब जो है फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस देता है। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि आर्टिकल 280 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन को सेटअप करते हैं ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि टैक्स रेवेन्यूज़ यूनियन और स्टेट्स के बीच में और अमंग्स द स्टेट्स कैसे डिवाइड किया जाएगा। तो फंक्शंस अगर हम देखें फाइनेंस कमीशन के, तो यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे चाहे ग्रांट्स इन एड की जो है प्रिंसिपल्स हों, या फिर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है स्टेट्स में उनके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से कैसे इनकम को सप्लीमेंट किया जाएगा, ये सारे फंक्शंस जो है वो फाइनेंस कमीशन के होते हैं। अब प्रेसिडेंट ही जो है इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं इसके, वो फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951 और फाइनेंस कमीशन रूल्स 1951 के अंडर जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब इसमें मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन जो है वो एक रेप्यूटेड पर्सन होते हैं जिनको कि पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस होता है, और चार और मेंबर्स होते हैं जिसमें किसी एक कोई जजेस ऑफ हाई कोर्ट हों, कुछ मेंबर्स, फिर जो है आपके स्पेशल नॉलेज ऑफ फाइनेंस वाले मेंबर, या जो है गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो, उनको मेंबर बनाया जा सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस हो, उनको जो है वो मेंबर बनाया जा सकता है। और स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स जो जिस भी पर्सन को हो, उनको भी मेंबर बनाया जा सकता है। अगर हम देखें तो आर्टिकल 281 हमारा कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखते हैं, और रिकमेंडेशंस जो हैं कमीशन की वो बाइंडिंग नहीं होती हैं गवर्नमेंट में। ठीक है। जो रिकमेंडेशंस होती हैं, कुछ रिकमेंडेशंस सिर्फ प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर ही जो है इम्प्लीमेंट कर दी जाती हैं, जैसे कि यूनियन टैक्सेस और ड्यूटीज़ और ग्रांट्स इन एड कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और कुछ जो है उनके लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। सबसे पहला अगर हम देखें तो फाइनेंस कमीशन 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है पीएमएलए के अंडर, तो उसको भी एक शेड्यूल्ड ऑफेंस माना जाएगा। मतलब आपने एक्चुअली में ऑफेंस तो नहीं कमिट किया, लेकिन आपने कॉन्स्पिरेसी ऐसे की किसी के साथ मिलकर कि उस ऑफेंस को एक तरह से आपने रियलाइज़ करवा दिया। ठीक है। मतलब कि आप उसमें डायरेक्टली खुद तो शामिल नहीं थे, लेकिन आपने कॉन्स्पिरेसी करके उस ऑफेंस को कमिट करवा दिया किसी और से, तो आपके ऊपर भी जो है वो एक तरह से शेड्यूल्ड ऑफेंस के चार्जेस लग सकते हैं। ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आपको पता ही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, और जो अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग से प्रॉपर्टी डिराइव की है तो उसको कॉन्फिस्केट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। और एक कॉम्प्लिकेशन देता है ये बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज के ऊपर, कि वो अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखें और इंफॉर्मेशन फर्निश करते रहें टाइम टू टाइम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को। ठीक है। तो अगर हम देखें तो कुछ इसमें डेफिनेशंस हैं कि अटैचमेंट क्या होगी, मतलब कि कितनी कैसे प्रॉपर्टी को अटैच करना है, प्रोहिबिट कैसे करना है। कोई भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र हो रही है अगर पीएमएलए के अंडर, किसी भी प्रॉपर्टी को जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी की अगर वो प्रॉपर्टी है तो उसको शेड्यूल्ड ऑफेंस में जो है वो कैसे डालना है, ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पर मेंशन है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, पेमेंट सिस्टम क्या होता है। ओके। तो पनिशमेंट क्या है मनी लॉन्ड्रिंग की, 3 से 7 साल की इसमें रिगरस जो है वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, कि जो कि जुरिस्डिक्शन पावर और अथॉरिटी पीएमएलए के अंडर एक्सरसाइज करती है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए जाते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंडर जब हम प्रोविजंस ऑफ पीएमएलए लगाते हैं। तो अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो 2004 में गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की थी एज अ सेंट्रल नेशनल एजेंसी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंफॉर्मेशन को जो है वो ऑब्टेन करने में, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करती है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हेडेड होती है, उनको ये रिपोर्ट डायरेक्टली करती है। ठीक है। अब केस क्या था, केस ये था कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बोला
कि अगर कोई भी पर्सन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में पार्टिसिपेट कर रहा है, चाहे उसने वो खुद कमिट ना किया हो एक्ट, लेकिन अगर उसकी वजह से वो एक्ट कमिट हुआ है तो उसको भी शेड्यूल्ड ऑफेंस में जो है वो माना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही यही रूलिंग दिया है कि अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस जो है, जो शेड्यूल्ड ऑफेंस क्या होता है, पीएमएलए के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर ऑफेंस जो है वो मेंशन किया गया है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस है, अगर आपने कोई ऐसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, आप खुद तो पार्टिसिपेट नहीं किए, आपने किसी क्रिमिनल को जिसने कि वो शेड्यूल्ड ऑफेंस किया है उसको फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, तो आपके ऊपर वो चार्जेस लगेंगे कि जैसे आपने वो शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, पीस डील विद यूएनएलएफ। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट में हमारे होम मिनिस्टर जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि मेती सेपरेटिस्ट ग्रुप यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट यूएनएलएफ के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है मणिपुर में। तो ये फर्स्ट नोन इंस्टेंस है एक वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप के साथ मणिपुर में जो एक पीस पैक्ट जो है वो सेंटर ने साइन किया है। अगर हम इंसर्जेंसी देखें मणिपुर में, तो एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया और कई सेपरेटिस्ट रिबेल ग्रुप्स मणिपुर में कब से चला आ रहा है। खासकर आपको पता होगा, अगर बैकग्राउंड पता हो तो, कि एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी 1891 में। उसके बाद जो है वो किंगडम ऑफ मणिपुर जो है वो कॉन्कर कर लिया था ब्रिटेन ने। इंडिया का ही पार्ट बन गया मणिपुर अक्टूबर 1949 में, और उसको हमने एक 1972 में एक सेपरेट स्टेट बना दिया। लेकिन कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हैं वो ये नहीं चाहते थे, वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते थे। तो ऑफ कोर्स वो इंसर्जेंसी की तरफ उन्होंने जो है वो रास्ता अपनाया, और फर्स्ट उनमें से एक सेपरेटिस्ट फैक्शन जो था वो यही था, यूएनएलएफ, जो 1964 में बना था। ठीक है, अब क्या रीजंस हैं ये इंसर्जेंसी के। तो मीतीज़ जो है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मणिपुर में, लेकिन वहाँ पर जो है रिजेंटमेंट है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडियन यूनियन के साथ वो मर्ज हों। तो एक तरह से इंसर्जेंसी भी चली 1960s में। वहाँ पर आपस में भी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे अभी हमने देखा था मणिपुर वायलेंस के केस में। तो कुकीज़ और नागाज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट है, फिर नागाज़ और मीतीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट है। दूसरा, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उतने अच्छे से नहीं हो पाई है, सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर ट्रोपोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें जो पीस डील साइन हुई है, इसमें सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस किए गए हैं गवर्नमेंट और इस यूएनएलएफ के बीच में, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी डिटेल्स अभी नहीं बताई गई हैं पब्लिक में। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स। गवर्नेंस के लिए ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को जो है सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं उनको 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। तो बेसिकली एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें पॉक्सो एक्ट के अंदर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाते हैं। जो सेंट्रल शेयर है इसमें वो निर्भया फंड से दिया जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया है कि इंडिया फर्स्ट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो ये पहली डेडिकेटेड पोलैरीमेट्री मिशन होगा जिसमें ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज को एक्सट्रीम कंडीशंस में ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस स्पेसक्राफ्ट में दो सैटेलाइट पेलोड्स, साइंटिफिक पेलोड्स होंगे जो लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किए जाएंगे। पहला होगा पॉलिक्स, दूसरा होगा एक्सपेक्ट। ओके, तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा है 5 साल के लिए, और पीएसएलवी द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमान। ओके, यूनियन कैबिनेट ने, ये टॉपिक भी ऑफ कोर्स आपके सोशल इश्यूज और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमान को जो है मंजूरी दे दी है। जो ये पीएम जनमान है, ये 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस 9 मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू जो है वो करने वाला है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड दोनों ही तरह की इसमें स्कीम्स होंगी, जिसमें परमानेंट हाउसिंग, रोड कनेक्टिविटी, पाइप वाटर सप्लाई, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, होटल कंस्ट्रक्शन, हॉस्टल कंस्ट्रक्शन, आंगनवाड़ी फैसिलिटीज़, स्किल डेवलपमेंट, ये सब जो हैं आपके पीवीटीजीज जो होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, उनको जो है वो एक तरह से फैसिलिटेट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है और गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को रीनेम करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है।
और आपको याद होगा 2018 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 1.5 लाख हेल्थ वेलनेस सेंटर्स जो है वो क्रिएट किए जाएंगे कंट्री में, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 60% फंडिंग देगी और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, प्राइमरी लेवल केयर सर्विसेज। और इनकी न्यू टैगलाइन रखी गई है आरोग्यम परमम धनम। ओके। अब आयुष्मान भारत आपको पता ही है कि क्यूरेटिव केयर, प्राइमरी केयर दोनों ही तरह की सपोर्ट देने के लिए स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी। इसमें ही हेल्थ इंश्योरेंस का भी कंपोनेंट है और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को अप्रूवल दे दिया है। लगभग 2.2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं। तो कुछ इंडियन आर्मी के लिए प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेंशन है, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल आपको पता ही है कि डिफेंस मिनिस्टर के अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसमें डिफेंस मिनिस्टर के अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और इवन 3 सर्विसेज जो हैं इनके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के भी जो है वो चीफ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इस मीटिंग में ही जो है जो अप्रूवल दिए जाते हैं, जो प्रोक्योरमेंट करनी होती है डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस के रिलेटेड जो है असेट्स के लिए। ओके। सो 2001 के बाद कारगिल वॉर कमेटी जो बनाई गई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है ये डिसाइड किया गया था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होनी चाहिए, ताकि जो है ये डिले ना हो प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिंधु दुर्ग फोर्ट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी ये प्रिपेयर कर रही है कि नेवी डे पर इस बार ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो सिंधु दुर्ग फोर्ट में होगी, महाराष्ट्र में। तो सिंधु दुर्ग फोर्ट एक आइलेट है अरेबियन सी में, महाराष्ट्र के पास, वेस्टर्न इंडिया में, जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर के टाइम पर बनाया था। फॉरेन कॉलोनाइजर्स के राइजिंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इसे बनाया गया था। 1664 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की गई थी और लगभग 3 साल लगे थे इसे बनाने में। लगभग 48 एकड़ में फैला हुआ है, फोर्टिफाइड वॉल्स हैं, 29 फीट हाई और 12 फीट थिक वॉल्स, जो कि 2 माइल्स तक जो है वो स्ट्रेच्ड हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अंकोर वाट। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अंकोर वाट टेम्पल जो कि कंबोडिया में लोकेटेड है, वो 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना है। और जो अनऑफिशियल टाइटल मिलता है ये 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड का, ये बिल्डिंग, स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्ट्स, डिज़ाइंस और इवन पीपल को भी जो है वो दिया जाता है। और अंकोर वाट अगर हम देखें तो लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है वर्ल्ड का। और इसको खमेर किंग सूर्यवर्मन टू ने फर्स्ट हाफ ऑफ 12th सेंचुरी में बनाया था। हिंदू गॉड विष्णु को ये डेडिकेटेड था ओरिजिनली, लेकिन बाद में 12th सेंचुरी के बाद इसको बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया। 1992 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला। सैंडस्टोन ब्लॉक से इसको बनाया गया है, इसके स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर हम देखें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है सियाम रैप, जो कंबोडिया में है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोलान हाइट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है यूएन जनरल असेंबली में, जो कि डीप कंसर्न दिखा रहा है कि इसराइल गोलान हाइट्स से विड्रॉ नहीं कर रहा है। तो गोलान हाइट्स एक रॉकी प्लेट्यू है साउथ वेस्टर्न सीरिया में, जो कि बाउंडेड बाय जॉर्डन रिवर है। रफली एक बोट शेप्ड ये प्लेट्यू है, 1150 स्क्वायर किलोमीटर्स का। इसराइल ने गोलान हाइट्स को सीरिया से जो है वो सीज़ किया था 1967 की 6 डे वॉर के बाद। और कई बार सीरिया ने इसको रीटेक करने की कोशिश की, लेकिन इसराइल ने 1981 में इसको यूनिलैटरली एनेक्स कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर लगभग 20,000 सीरियंस और 20,000 इसराइलीज रहते हैं। और इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस ये है कि इस जब भी बारिश होती है यहाँ पर, तो जो इसका पानी है वो जॉर्डन रिवर में जाता है। जॉर्डन रिवर जो कि 1/3 ऑफ इसराइल के वाटर को की नीड्स को सर्व करती है। ऊपर से यहाँ का जो लैंड है वो भी बहुत फर्टाइल है, इसलिए वो फार्मिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इसीलिए जो है इसराइल इसको गिव अप नहीं करना चाहता है। ओके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is 16th Finance Commission. This topic is important for your governance section. So Union Cabinet has given the terms of reference, has rather approved the terms of reference for the 16th Finance Commission, and the government has also set up a deadline that by October 31st, 2025, the panel shall submit its recommendations. So you know that Finance Commission is set up
to recommend disaster management financing, determining revenue to states, increasing the consolidated fund of states, increasing income of gram panchayats, augmenting the consolidated fund of states, and supplementing resources of panchayats and municipalities. So we know that it is constituted by the president under Article 280 of the Constitution, and the major role of it is to recommend the distribution of tax revenues between the union and the states and amongst the states themselves. So if we look at the functions of the Finance Commission, then it talks about distribution of taxes between union and states, principles which should govern the grants in aid of the revenues of states, and measures which are needed to supplement the resources of panchayats and municipalities in the state. So, who appoints it? Of course, the President of India under Article 280 appoints this, and the chairman and members of the commission are selected as per the Finance Commission Act and Finance Commission Rules of 1951. So, chairman of the commission is selected from amongst the persons who have had experience in public affairs, and four other members are selected from among persons who are qualified to be appointed as judges of a high court, who have special knowledge of finances in matters of government accounts, who have had wide experience in financial matters, administration, and even special knowledge of economics. So the reports of Finance Commission are made under Article 281. Under Article 281, actually, President lays down the report before each house of the parliament, and the recommendations of Finance Commission are only recommendatory, and they're not binding on the government. So there are two types of recommendations by the commission, how they are implemented. So the major recommendations with respect to distribution of union taxes and duties and grants in aid, they are implemented by the order of president, but the other recommendations of the Finance Commission are implemented by the executive orders. So if we look at the first Finance Commission, then it was set up in 1952. So the next topic is Prevention of Money Laundering Act. This topic is important for your governance section and also your security section. So Supreme Court has ruled that criminal conspiracy will be treated as a scheduled offense under PMLA 2002. So what is PMLA? The act was enacted to prevent money laundering and to provide for confiscation of property which is derived from this money laundering. Okay, so act also imposes an obligation on banking companies, financial institutions, and intermediaries to verify the identity of clients and maintain records and furnish information as prescribed to the Financial Intelligence Unit of India. Okay, so if we look at the provisions of the PMLA Act, so there are key definitions mentioned in this act with respect to attachment, proceeds of crime, money laundering, what is payment system. Then there is punishment for money laundering, which extends between 3 to 7 years. So the principles of natural justice guide the implementation of PMLA and the procedure laid down under the Code of Civil Procedure. Okay, so the Financial Intelligence Unit was established by the Government of India in 2004. It acts as the central national agency responsible for receiving, processing, analyzing, and disseminating information relating to suspect financial transactions. So FIU is an independent body which reports directly to the Economic Intelligence Council headed by the Finance Minister. So the recent verdict basically pertains to the case when ED was asking the Supreme Court that if in a case a person has participated in a criminal conspiracy to facilitate the conduct of a scheduled offense by a criminal, then the person who has only participated in the criminal conspiracy should also be tried as an accused, and he or she should be considered that he has participated in that scheduled offense. So scheduled offense, we know that it is any offense which is mentioned in that particular act, in this case PMLA. Okay, so Supreme Court has agreed, and Supreme Court has said that only if the criminal conspiracy is conducted which is basically which leads to the committing of an offense which is specifically included in the schedule of PMLA, only in that case this criminal conspiracy would be tried as a scheduled offense. Okay, so the next topic is peace deal with UNLF. This topic is important for your
governance section and also your social issues. So Union Home Minister has announced that the government of India has signed a peace agreement with the Meitei separatist group UNLF in Manipur. So this is the first known instance of a Valley based insurgent group from Manipur entering into a peace pact with the central government. So what is insurgency in Manipur? So it's an armed conflict between India and a number of separatist rebel groups in Manipur. So if we look at the historical background of Manipur, then after a brief Anglo-Manipur War of 1891, the kingdom of Manipur was conquered by Britain and it became a part of British Protectorate. Manipur became a part of India in October 1949, and this became an issue because many organizations and many groups within Manipur were opposed to the idea of joining the Indian Union, and they dismissed this merger with India as involuntary. So the first separatist faction which emerged was this UNLF, which was founded in 1964, and they were against this merger of Manipur with the Indian Union. So the ethnic conflict also started, apart from, of course, the issue of merging with Indian Union. The ethnic conflict started. We have seen it in Manipur violence case also, that Kukis and Nagas are fighting amongst each other. There is also conflict between Nagas and Meiteis. Apart from that, there is lack of socio-economic development owing to the topographical structure of Manipur. So as of now, the peace deal provisions have not been made public by the government, but we have seen that there will be suspension of operations between the two parties, and the the future perhaps the details would be put out in public. So the next topic is fast track special courts. This topic is important for your governance section. So Union Cabinet has recently approved the continuation of fast track courts dedicated to the dispensation of justice in cases of sexual violence for a period of 3 years. So this fast track special courts was formulated by a centrally sponsored scheme which is meant to dispose of the cases related to rape under the POXO Act, and the central share of funding is made from the Nirbhaya fund, and the nodal ministry for implementing this fast track special court scheme is the Department of Justice under Ministry of Law and Justice. So the next topic is X-ray polarimeter satellite. This topic is important for your science and tech section. So recently ISRO has announced that India is set to launch its first X-ray polarimeter satellite, which will be the first dedicated polarimetry mission to study the dynamics of bright astronomical X-ray sources in extreme conditions. So this spacecraft will carry two scientific payloads in low Earth orbit, Pollux and Expect. So this satellite will be placed in a low Earth orbit, and it will have a mission life of approximately 5 years. It will be launched from the PSLV. So the next topic is Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Mahabhiyan. So this topic is important for your governance and social issues. So Union Cabinet has recently approved the Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Mahabhiyan, and this is meant to focus on 11 critical interventions through 9 ministries, including the Ministry of Tribal Affairs. So the scheme will provide crucial interventions like permanent housing, road connectivity, piped water supply, mobile medical units, hostel construction, Anganwadi facilities, skill development centers, etc. So Ministry of Ayush will set up Ayush Wellness Centers, and Ministry of Skill Development will of course help in multi-purpose centers and hostels as per the suitable skills of these communities. So this scheme is basically meant for the particularly vulnerable tribal groups, and this was announced in by the Prime Minister during his visit to Jharkhand. So the next topic is Ayushman Arogya Mandir. This topic is important for your governance section. So recently Union government has decided to rename the existing Ayushman Bharat Health and Wellness Centers as Ayushman Arogya Mandir. We know that in 2018 1.5 lakh health and wellness centers were meant to be created in the country, and it was decided that central government would be providing 60% of the funding for the same. These health wellness centers provide maternal and child health care services and primary level care for emergencies and trauma. And the new tagline for these Ayushman Arogya Mandir is Arogyam Paramam Dharnam.
Okay, so the next topic is so what is Ayushman Bharat? We know that it was launched in 2018. So it is meant for curative and primary care, and it also has a component of health insurance. And National Health Authority is responsible for implementation of this scheme. So the next topic is Defense Acquisition Council. This topic is important for your security section. So Defense Acquisition Council has accorded approval in respect of acceptance of necessity for various capital acquisition proposals, which amount to almost 2.2 lakh crore rupees. So these are the certain product, or these are the certain asset procurements that the government would be making, rather the Ministry of Defense would be making. You do not need to remember them, just give it a glance. Okay, so what is Defense Acquisition Council? So this was set up under the chairmanship of Defense Minister. Apart from that, there is also Minister of State for Defense, members of Army, the Chief of Army Staff, Naval Staff, and Air Staff as members. There is also then the Indian Coast Guard, who is represented on this Defense Acquisition Council. So actually, it was formed when the group of ministers recommended after 2001, in 2001, after the Kargil War, that there should be a system which would ensure expeditious procurement of the approved requirements of the armed forces in terms of the capability sought. And this was meant to avoid the delays which were happening in earlier. Okay. So the next topic is Sindhu Durg Fort. This topic is important for your art and culture section and also your security section. So Indian Navy is preparing to demonstrate its operational capabilities in the grand operational demonstration on Navy Day at Sindhu Durg Fort in Maharashtra. So this Sindhu Durg Fort is an islet in the Arabian Sea of the coast of Maharashtra in western India, and it was built by Chhatrapati Shivaji Maharaj of the Maratha Empire. And the construction began in 1664, and it took about 3 years to complete. The objective of this fort was to counter the rising influence of foreign colonizers in this area. It is spread over 48 acres with fortified walls, which are of about 29 feet high and 12 feet thick, and they stretch for 2 miles. So the next topic is Angkor Wat. This topic is important for your art and culture section. So Angkor Wat temple, which is located in Cambodia, has been selected as the eighth wonder of the world. Of course, it's an unofficial title. So Angkor Wat is the largest religious monument in the world, and it was built by the Khmer king Suryavarman II in the first half of 12th century. Originally, it was dedicated to Hindu god Vishnu, but it later became a Buddhist temple by the end of 12th century. So in 1992, this temple complex has been named as a UNESCO World Heritage Site. So sandstone blocks were used to build the structure. Okay, and it is located in the northwestern province of Siem Reap in Cambodia. So the next topic is Golan Heights. This topic is important for your international relations. So India has voted in favor of a draft resolution in UN General Assembly, which has expressed deep concerns over Israel not withdrawing from the Golan Heights area. So Golan Heights is a rocky plateau in southwestern Syria, which is bounded by the Jordan River, and this is basically a roughly boat-shaped plateau which has an area of about 1150 square kilometers. Israel seized the Golan Heights from Syria in the 1967 Six-Day War, and since then Israel has captured this area. Syria tried to recapture it time and again, but since 1981, Israel has unilaterally annexed this area. About 20,000 Syrians and 20,000 Israelis live here in the Golan Heights. And what is the strategic significance? Why Israel does not want to give it up? Because whenever it rains, the water goes to the Jordan River, which feeds or which gives water supplies to Israel. The one third of Israel's water supply comes from this Jordan River, and also the land here is very fertile, which is very good for farming. That's why, of course, the state of Israel does not want to lose its control over Golan Heights. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.